Hello everyone, welcome back to the part 2 of the series Study Medical in Abroad. सी 12th में मेडिकल स्ट्रीम लेने के बाद ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को ड्रीम होता है टू बिकम डॉक्टर, बट कभी कभी हमारे से एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लूज होप. बट टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस यूनिवर्सिटीज वेयर यू कैन परस्यू योर मेडिकल करियर इन अब्रॉड. Though there are various countries where you can pursue your career of becoming doctor, but today let's talk about Georgia. So TSMU, that is Tbilisi State Medical University, is the largest public university of Georgia and was established in the year 1918. सो अब डिस्कस करते हैं क्या बेनिफिट्स है टीएसएमयू यूनिवर्सिटी के. सो इस यूनिवर्सिटी में यू विल गेट क्लासरूम्स इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, सिमुलेशन लैब्स एंड एनाटॉमी रूम्स. यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं. इससे आपको बैचलर्स में ही हैंड्स ऑन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी, पेशेंट डीलिंग सीखोगे, विच विल मेक योर इंटरेस्ट इवन मोर. It has highly qualified and experienced faculty. This college has over 150 hospitals globally. And you get hands-on training from second year onwards, so that is really great. So as I have told you before also that TSMU is one of the largest medical university in Georgia which prioritizes practical medical training, offering students access to high-tech multi-profile clinics and modern teaching methods, as well as a well-equipped campus for comprehensive medical education and research. The university's faculty includes professors, associate professors, and assistants, and the degree is valid in UK, USA, Europe, worldwide. सो अब डिस्कस करते हैं क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है टीएसएमयू यूनिवर्सिटी में. सो देयर इज एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी एंड बीपीडी, दैट इज फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैब. सो ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस इज 5 years plus 1 year of internship. BDS is 5 years, BPT is 4 years, and pharmacy is also 4 years. TSMU Library provides comprehensive resources and services, including a variety of printed and electronic materials, access to scientific databases, and a dedicated computer rooms with 24/7 internet access, serving students, staff, and members of the university. They provide furnished hostels equipped with essential amenities and free Wi-Fi access. Additionally, Indian food is available with veg and non-veg options, catering to the preferences of Indian students. So कुछ बेसिक क्राइटेरिया है यू नीड टू क्वालिफाई इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी. सो पहला क्राइटेरिया है इंग्लिश मीडियम इज नेसेसरी, नीट शुड बी क्वालिफाइड, पीसीबी में 50% होने चाहिए, एक एंट्रेंस एग्जाम होगा इंग्लिश का, उसके बाद एक बेसिक इंटरव्यू होगा रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड बायोलॉजी. So let's just summarize that why TSMU is one of the great choice for pursuing your medical career. So first, it gives you globally recognized degree. Secondly, it is a government university. It gives you high quality education and modern infrastructure. It is one of the oldest university and is located in the capital of Tbilisi. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अब ये डाउट होगा कि यार हम बाहर कैसे जाए, अप्रोच कैसे करें, हमें कोई गाइडेंस नहीं है देने वाला, कोई हमारा ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है जो कि बाहर सेटल्ड हो. सो इन दैट केस डोंट यू वरी, सिलेक्टर यूनिवर्सिटी विल हेल्प यू. It is one of the best education organizations from last 14 years, which has sent over 2,000 plus students in abroad. I have also attached a form link in my description. You can fill it out in case of any query. Also, in next video, we will discuss about another college in another country. So till then, stay tuned for part 3. And don't forget to subscribe the channel and like the video and share it among your friends.